how do you see UGC as a body? I mean, does it have any independence in today's India, or it has become a regulatory mechanism for the government to control educational institutions? No, I must say UGC or any institution in the so-called this parliamentary democracy where elections happen, people come win, and they also control institution. There are ministers. No institutions you can imagine is independent. So UGC was never an independent, even when the Congress was in power. But yes, during that time, I must say, UGC with few individuals who could think like Sukhdev Thorat sir, who come from the Dalit community, who would understand the pain and the suffering of Dalit, Adivasi and other marginalized community, who would make some good, who would bring some good changes, or would like to bring good changes in the university campuses. बट नॉट कि यूजीसी हमेशा से इतना कोई प्रोग्रेसिव रहा हुआ है. हमें पता है यही यूजीसी है जिसने बहुत लंबा समय लगाया है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बाबा साहेब, सावित्रीबाई फुले, बिरसा मुंडा, महात्मा फुले और तमाम अनगिनत नाम जो हमें पता है लेकिन यूजीसी को नहीं पता था, यूजीसी की कमेटी को नहीं पता था. तो उस तरह के कोई कभी कोई गाइडलाइन नहीं रही है ना. तो जो अपने आप को अपर कास्ट लिबरल कहते थे वो नेहरू, गांधी और राजेंद्र प्रसाद और इस तरह के जो उनकी जो कोटरी है, जो हमारे जेएनयू में भी मुखर्जी बैनर्जी जो कोटरी रही हमेशा, उस तरह की जो यूजीसी को और वही रिफ्लेक्ट उस तरीके करती रही यूजीसी में भी. तो इन लोगों ने भी जो है कभी अंबेडकर को बाबा साहेब नहीं कहा इनके, या फिर कभी इंक्लूड नहीं किया, जैसे नेहरू को पंडित कहा या गांधी को महात्मा कहा. सो देयर वाज द यूजीसी ऑन द अदर हैंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम वाज आल्सो एक रिफ्लेक्शन रही है सो कॉल्ड अपर कास्ट लिबरल्स का, वो आर ऑल्सो हाईली कास्टिस्ट व्हेन इट कम्स टू कि उनके जब उनका हेजेमनी का ब्रेक करने की बात होती है. अभी आपके पास राइट विंग अपर कास्ट है जो चाहता है कि सावरकर इंक्लूड हो, जो चाहता है कि संघ से लोगों का रिक्रूटमेंट हो, जो चाहता है कि एसटी एससी ओबीसी भी यदि कोई रिक्रूटमेंट होता है तो वो उस तरह का एससी एसटी ओबीसी हो जो नतमस्तक हो जाए, जो अंबेडकर के रेडिकल विचारों को ना माने, जो चाहता है कि यूनिवर्सिटी में जो अंबेडकर चेयर है वो संघ के द्वारा संचालित हो. और इसीलिए बहुत सारे अंबेडकर चेयर जो सुखदेव थोराट सर के टाइम पे शुरू हुए थे, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये अभी संघ के द्वारा संचालित किया जाता है, जहाँ पे अंबेडकर और सावरकर को समान दिखाने की कोशिश की जाती है. देयर आर मेनी सच एफर्ट. तो एज पर एज आई अंडरस्टैंड नो इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री कभी भी वो इंडिपेंडेंट नहीं रही हुई है. कभी वो दूसरे अपर कास्ट के खेमे में रही है, आज वो एक संघ के अपर कास्ट वाले खेमे में है. So what you're suggesting is that कि in the end ये upper caste खेमे में ही रहती है, irrespective of the fact who's in government. चाहे वो right wing government हो या left wing government हो, जो representation होता है वो upper caste का होता है, जो interest serve करती है UGC वो upper caste का serve करती है. बिल्कुल. You tell me like how long you are a journalist, you must be knowing, you are visiting university campuses, interacting with the students. Have you heard like before Rohit Vemula, you are from Delhi and even JNU, such a so-called radical campus, when I entered there, except on 14 April Ambedkar was never remembered. In a classroom, they would talk a lot about Nehru, calling Pandit, not even Nehru. But when it comes to Ambedkar, they would just reduce him in the last chapter, saying Dalit question in our syllabus, in sociology or in political science or in history, there will be alternative history. How come SC, ST, OBC and minority who form the majority of your country, their history becomes some alternative history for some Mukherjee and Banerjee? And how come less than 50% people history becomes the history of everyone? The Birsa Munda was not discovered in your campuses. Birsa Munda was discovered by our people on the land. People wrote about him and then it came to the university. Similarly with Baba Saheb. It is not the academician who brought Baba Saheb from Gully to Delhi or now in the abroad also. It is our people who compelled to write about him with their celebration, with their assertion. So what has university done for such a long time? What have these bodies have done to us? Nothing. They're simply reflection of this Hindu upper caste.